हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स फ्रंट। दोस्तों, सिविल्स फ्रंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली मेंस आंसर राइटिंग थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी 2025। टुडे इज डे 9 of our program, and on the day 9 we are trying to understand the topic salient features of Indian society, diversity of India, role of women organization, population and associated issues. We will try to understand the previous year questions of these topics. Now the first question is very important question. We have to critically examine what we have to critically examine that whether the growing population is cause of poverty or poverty is the main cause of population increase in India. पॉपुलेशन जो ग्रो हो रही है, क्या वो पॉवर्टी का एक मेन कॉज है या पॉवर्टी ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमें ये दोनों एस्पेक्ट को एग्जामिन करना है। फाइन, देखो, नाउ द पॉइंट इज population growth and poverty in India. The relationship between both of them, the population growth and poverty, the relationship between both of them is very much intricate. Why it is very much intricate? Because they both act as a causes and consequences of each other in a cyclic manner. For example, poverty is cause of the population growth and population growth is also a cause of the poverty. So it is essential for us to critically evaluate whether the population growth drives poverty, क्या population growth के वजह से poverty हो रही है, या फिर whether the poverty with its socio-economic limitations leads to the higher population growth, कि क्या poverty और उसके जो socio-economic limitations है इसके वजह से higher population growth हो रही है, ये हमें एग्जामिन करना है। Now the first aspect we will try to understand is ग्रोइंग पॉपुलेशन एज अ कॉज ऑफ पॉवर्टी, कि किस तरीके से ग्रोइंग पॉपुलेशन रिजल्ट्स इनटू द पॉवर्टी, ग्रोइंग पॉपुलेशन के वजह से ही पॉवर्टी हो रही है। हम इस डायमेंशन को एग्जामिन करते हैं। इसका सबसे पहला एस्पेक्ट क्या है? देखो, बिकॉज देर इज अ पॉपुलेशन ग्रोथ इट विल डेफिनेटली पुट अ स्ट्रेन ऑन द रिसोर्सेज। व्हेन द पॉपुलेशन रैपिडली ग्रोथ इट एग्जैवरेट्स द प्रेशर ऑन द लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, and because of that when population grows there is a strain on the limited resources, correct? For example, the land, water and food. For instance, India's arable land per capita has declined significantly over the decades. जो per capita जो arable land है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो चुकी है सिग्निफिकेंटली। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिवीजन हो रहा है लैंड का, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब एक के दो बच्चे फिर दो के चार, तो इस तरीके से जो अमाउंट ऑफ लैंड वॉज ऑलवेज कांस्टेंट, करेक्ट? अमाउंट ऑफ लैंड जो था वो कांस्टेंट, तो रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। सो व्हेन दोज लिमिटेड रिसोर्सेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, there will be the decline in the availability, correct? And that's why there is a reduced agricultural productivity and increased rural poverty. क्योंकि अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, खास करके अगर हम एग्रीकल्चर लैंड की बात करें, सो एग्रीकल्चर लैंड इज लिमिटेड, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, सो देयर इज अ डिक्लाइन इन व्हाट? डिक्लाइन इन पर कैपिटा लैंड, डिक्लाइन इन पर कैपिटा लैंड, per capita land. And because there is a per capita land is in decline, so it will definitely reduce the agricultural productivity. And if agricultural productivity is reduced, because the population is very much dependent for their employment on the agriculture, if its productivity itself decreased, then it will definitely increase the rural poverty, because rural population is mainly dependent on agriculture for their employment. Strain on the public services. When population grows, it overburdens education, healthcare and housing systems. For example, India's literacy rate stands at 77.7% in 2021, but the quality education access remains limited in overpopulated regions, perpetuating the poverty cycles. For example, now the point is, जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो एजुकेशन, हेल्थ केयर और हाउसिंग सिस्टम्स पर भी बर्डन आ जाता है। एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, हाउसिंग सिस्टम्स, दे गेट ओवरबर्डन्ड due to increased population, correct?
and because of that then the access to the quality services like quality education or quality health care, that remains limited. Fine. Because of the population growth there is a increase in labor supply, क्योंकि population बढ़ रहा है तो labor supply जो है वो भी बढ़ रहा है, but fails to match employment opportunities. employment opportunities जो available है उससे मैच होने में लेबर सप्लाई, जो भी क्वालिटी ऑफ लेबर आ रही है और उनका स्किल सेट्स है वो मैच नहीं हो रहा है, पर्टिकुलरली अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो इसके वजह से क्या होता है कि लेबर सप्लाई का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, देयर इज़ अ टू मच ऑफ द लेबर सप्लाई एंड देयर आर नॉट दैट मच अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एंड दैट इज़ द रीज़न कि क्यों, मतलब इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पर किसी भी वैकेंसी के लिए, किसी भी 2 या 4 वैकेंसी के लिए हज़ारों में अप्लीकेशंस आते हैं, द रीज़न इज़ देयर इज़ अ टू मच ऑफ लेबर सप्लाई, वेयर एज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट कीपिंग pace with the labor supply, and that's why there is too much of unemployment or underemployment. When there are too much of the labor supply, when there are too much of the people applying for a one particular job, so in that case there is always underpayment for that particular position, so that leads to the low wages, and if low wages are there definitely that persist poverty, correct. Then urban overcrowding, because there is a rapid migration to cities due to population growth creates slums, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ के वजह से रूरल पॉवर्टी, रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम होने के वजह से दे आर गोइंग towards cities, toward urban areas for better employment opportunities, and that is resulting into the overcrowding of the urban areas. Urban areas overcrowd हो रहे हैं, and that is creating slums. That is creating slums. For example, Dharavi in Mumbai. So overcrowding limits the access to sanitation, healthcare, and education, because the services and the institutions provide these services are limited, but the population increased on that particular region. इस वजह से यही लोग स्लम्स वगैरह और जो पुअरली बेसिकली सैनिटाइज्ड और पुअरली इक्विप्ड एरियाज होते हैं वहाँ उन्हें रहना पड़ता है. Environmental degradation is also one of the factor. Overpopulation leads to deforestation. ओवर पॉपुलेशन की वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है, पोल्यूशन होता है, एंड डिप्लेशन ऑफ द रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेस है उनका डिप्लेशन होता है, एंड दैट एक्चुअली इम्पैक्ट द एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड्स कॉजिंग रूरल पॉवर्टी. डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, मतलब कि फॉर एग्जांपल वाटर रिसोर्सेज की अगर बात करें, बी इट इन द रूरल एरियाज और बी इट इन द अर्बन एरियाज, द वाटर रिसोर्सेज गेट डिप्लेटेड ड्यू टू मोर पॉपुलेशन डिपेंडिंग अपॉन द सेम अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज. Correct. Also there is a pollution, also there is a deforestation there. Deforestation is there because, why deforestation is there? Because there is a requirement of more land to build more houses and more agricultural land. So to make more agricultural land available, people cut the forest. So that deforestation is also one of the result and consequences of the overpopulation. And because of this deforestation, population and depletion of the resources, it directly impacts the agriculture, and that's why its livelihood, okay? And that is causing rural poverty. For example, if we talk about the states like Bihar and Uttar Pradesh, they face frequent natural disasters they are facing, and this frequency of the natural disasters is actually exacerbated by the environmental mismanagement. And as we can see, there is a frequency in the disasters, be it floods, be it drought, because of the climate change, and climate change is basically an impact and outcome of the environmental degradation. So as we have seen how the growing population was a cause of poverty. Now we will try to understand how poverty is the cause of population growth. For example, see, when poverty actually restrict the access to education. When people are poor, they get restricted access, they may not get access to education, or particularly if we see woman may not get access to education. So that's why illiteracy and lack of awareness about family planning result in high fertility rates.
लिटरेसी के वजह से, इलिटरेसी के वजह से, बेसिकली इलिटरेसी के वजह से, क्योंकि गरीबी के वजह से एजुकेशन को जो एक्सेस है वो रेस्ट्रिक्टेड रहता है, और उस वजह से खास करके वुमन भी जो है उन्हें एजुकेशन का एक्सेस नहीं रहता है क्योंकि गरीबी के वजह से, बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी। एंड दैट एक्चुअली, क्योंकि फिर और इस वजह से वुमन और स्पेशली पीपल who had no access to education, they remain illiterate, and they also do not have awareness about about family planning. फैमिली प्लानिंग की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से हायर फर्टिलिटी रेट्स हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर हम TFR की बात करें, टोटल फर्टिलिटी रेट इज़ हायर इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स लाइक बिहार। जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स है जैसे कि बिहार, वहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि 3 इज़ द फर्टिलिटी रेट कंपेयर टू केरला विच इज़ 1.8। ओके, ऑल्सो हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, पुअर हेल्थ केयर एक्सेस लीड्स टू दी हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स बिकॉज देर इज़ पुअर हेल्थ केयर एक्सेस बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी। गरीबी के वजह से, पॉवर्टी एक्चुअली लीड्स टू दी पुअर हेल्थ केयर एक्सेस, and that leads to high infant mortality rates, and that prompts families to have more children as a form of social security, because हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होने के वजह से द सर्वाइवल चांसेस जो है बच्चों के वो कम होने की वजह से पेरेंट्स मोर लाइकली गो फॉर मोर चिल्ड्रंस बिकॉज दे फील दैट देर आर हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, सो वी वांट समवन एज अ सोशल सिक्योरिटी, सो दे गो फॉर मोर चिल्ड्रंस। फॉर एग्जाम्पल, इन उत्तर प्रदेश infant mortality stands at 43 per 1000 live births, which is much higher than the national average of 28. Also, economic dependence on large families in poverty stricken rural areas, poverty stricken जहाँ पर गरीबी है, इस तरीके के रूरल एरियाज में children are often seen as a economic assets contributing to the family income। जहाँ पर गरीबी ज़्यादा होती है, खास करके रूरल एरियाज़ में जहाँ पर गरीबी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे चिल्ड्रंस को एक बेसिकली इकोनॉमिक एसेट की तरह देखा जाता है। दे आर सीन, दे आर लुक्ड अपॉन एज एन इकोनॉमिक एसेट हु इज़ गोइंग टू कंट्रीब्यूट और हु विल कंट्रीब्यूट इन द फैमिली इनकम थ्रू हिज लेबर और थ्रू हिज और हर लेबर, करेक्ट। सो दिस इंक्रीजेज द फर्टिलिटी रेट्स इन पुअर हाउस होल्ड्स। क्यों? देखो, बिकॉज देर इज़ अ पॉवर्टी के वजह से they feel that we need more labor in our home, in our house, and that's why they go for more children, because they see that if there are more children, we will have more laborers in our house, and they will go for work, and they will contribute to the family income, and that is one of the reason of the increased fertility rates in the poor households, that again perpetuate the poverty population cycle. Now, lack of contraceptive use, for example, see economic constraints के वजह से और social taboos के वजह से, because of the economic constraints and because of the social taboos, there is a limited access to contraceptives and family planning services. Okay, so unmet need for contraception is the highest among India's poorest quintile, contributing to the population growth. Because of the lack of contraception and their access, there is a high population growth, and this lack of contraceptives or lack of access to contraceptives is actually there because of the two reasons. First is economic constraint, and second is social taboo. Cultural and social factors, if we see, poverty amplifies cultural norms that favor large families for social and economic reason. For instance, patriarchal societies in rural India, they often encourage more children to ensure male heirs, contributing to the higher population growth. So basically, in the patriarchal societies, or where there is a patriarchal mindset in families, so they have preference to the son, and that's why for having son, they go for more and more children until they get son. So that also contribute to the higher population growth, and that is one of the cultural norm. So how this cycle of poverty and population growth is interconnected, if we see, so it is a vicious cycle. See, poverty leads to higher population growth due to low education, poor health, and lack of family planning. In turn, then higher population growth intensifies poverty by straining resources, creating a self reinforcing cycle. एक vicious cycle है.
हायर पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉवर्टी के वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि लो एजुकेशन, पुअर हेल्थ एंड लैक ऑफ प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, करेक्ट। एंड इन टर्न हायर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो पॉवर्टी को इंटेंसिफाई करती है। क्यों? क्योंकि हायर पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से रिसोर्सेज पर स्ट्रेन आता है और एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल जो है वो क्रिएट हो जाती है। फाइन। पॉलिसी इंटरवेंशंस टू ब्रेक द साइकिल, अब इस साइकिल को ब्रेक करना तो ज़रूरी है। इट इज़ वेरी मच एसेंशियल टू ब्रेक दिस साइकिल। नाउ व्हाट आर द पॉलिसी इंटरवेंशंस रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस साइकिल? फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एजुकेट एंड अवेयर। Education, we need to expand educational access especially for women, correct, which is very crucial. For example, Kerala's focus on female literacy has resulted in low TFR which is 1.8 and reduced poverty. केरला ने जो फीमेल लिटरेसी पर फोकस किया है जिस वजह से लो फर्टिलिटी रेट्स अभी वहाँ पर हैं और पॉवर्टी भी जो है कम हो चुकी है। Access to health care and contraceptives, we need to strengthen the public health care systems and we need to improve the access to contraceptives which can also reduce fertility rates. Employment generation, we need to create more opportunities in rural areas through programs like Manrega that will help reduce poverty and its impact on population growth. Social security systems, providing robust old age pensions and child health care schemes that reduces dependency on the larger families for economic security and that will address both poverty and higher fertility rates. Then last one is urban planning and infrastructure. See, better urban planning and resource management, अर्बन में जो रिसोर्सेज है उनका बेटर मैनेजमेंट और उसका अर्बन एरिया का बेटर प्लानिंग जो है दैट कैन एलिवेट द इम्पैक्ट ऑफ population growth on cities, reducing poverty cycles. So basically, relationship between the population growth and poverty in India is bi-directional, where each feeds into the other, and that's why the population growth that intensifies poverty by straining resources, limiting economic opportunities, while poverty drives population growth through lack of education, healthcare and social security. So breaking this cycle, we need to break this cycle. Breaking this cycle requires a multi-pronged approach which focuses on education, healthcare and economic growth and also gender empowerment. So sustainable development goals can only be achieved by addressing these interrelated challenges cohesively. Now moving to the next question. Do you think marriage as a sacrament is losing its value in modern India? Do you think marriage as a sacrament in losing its value in modern India? Okay. See, first of all, we have to understand. See, marriage, if we see, traditionally it was regarded as a sacred institution in the Indian society. If we see, traditionally marriage is regarded as the sacred institution in the Indian society. But now that is undergoing significant transformation in the modern times. It is undergoing significant transformation. Historically, if we see, this sacred institution, this sacredness of this institution is actually rooted in the religious and cultural values. Like marriage has been seen as a sacrament symbolizing a lifelong commitment, a lifelong commitment. However, with rapid urbanization, globalization and changing societal norms, this is very important. With the rapid urbanization, globalization and changing societal norms, the concept of marriage as a sacrament is being increasingly questioned, Fine. While its sanctity still holds relevance for many, बहुत लोगों के लिए अभी भी इसकी जो sanctity है वो होल्ड करती है relevance, लेकिन अभी attitudes जो है they are getting evolved, attitudes are getting evolved, especially with respect to the marriage. So that is suggesting a shift towards more individualistic and pragmatic approach. The choices of marriage are now becoming more individualistic and pragmatic, correct? So there is a shift. Now the first part of the question we have to write about what are the evidence that indicates a decline in sacramental value of marriage. मैरिज की जो सैक्रामेंटल वैल्यू है, सैक्रामेंटल वैल्यू जो है वो डिक्लाइन हुई. ऑन विच बेसिस वी कैन से दिस? फर्स्ट, देर इज़ अ राइजिंग डाइवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं इंडिया में, पर्टिकुलरली अर्बन एरियाज़ में.
फॉर इंस्टेंस अगर हम मुंबई दिल्ली की बात करें तो देयर इज़ अ स्टेडी राइज इन द डाइवोर्स पिटिशंस विच रिफ्लेक्ट चेंजिंग परसेप्शन ऑफ मैरिज एज अ लाइफ लॉन्ग बॉन्ड। इससे ये समझ में आता है कि मैरिज एक लाइफ लॉन्ग बॉन्ड है। इस परसेप्शन को लेके काफ़ी वेरिएशंस आ रहे हैं, पीपल के लोगों के जो परसेप्शन है इस बात को लेके कि मैरिज एज अ लाइफ लॉन्ग बॉन्ड, ये परसेप्शन चेंज हो रहा है। करेक्ट। ऑल्सो डिले इन मैरिजेस, मेनी यंग इंडियंस आर डिलेइंग मैरिजेस। यंग इंडियन जो है आजकल के वो मैरिज को काफ़ी ज़्यादा डिले कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे वांट टू फोकस ऑन करियर्स, दे वांट टू फोकस ऑन एजुकेशन और दे वांट टू फोकस ऑन द पर्सनल ग्रोथ। Because of so many reasons, the marriage age has also increased. Correct. Also, growth of a live-in relationship. Correct. Live-in relationship में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। They are increasingly accepted in urban India. आज के अर्बन इंडिया में लिव-इन रिलेशनशिप्स जो है वो एक्सेप्ट हो रहे हैं, उसकी एक्सेप्टेंसी बढ़ रही है। एंड दैट्स वाई इट एक्चुअली चैलेंजेस, ये जो लिव इन रिलेशनशिप की जो एक्सेप्टेंसी है, the acceptancy for this live-in relationship concept is actually challenging. To what it is challenging? It is challenging the traditional notion of marriage as the only socially acceptable form of union. See, earlier the form of union which was socially acceptable was marriage, and that was the only socially acceptable form of union. But because there is an increase in the acceptance to the concepts of social live-in relationship, that's why people are not probably feeling that it is important for them to marry, to be together. So that is one of the aspect. Decline in arranged marriages. While arranged marriages remains prevalent even today, arranged marriages are prevalent, there is a notable increase in love marriages. Love marriages काफ़ी ज़्यादा हो रही है. Also marriages based on the individual choices. इंडिविजुअल चॉइसेस पे मैरिजेस होने की वजह से अरेंज मैरिज जो है वो कम हो रही है। एंड दिस रिफ्लेक्ट्स अ शिफ्ट अवे फ्रॉम द रिलीजियस एंड फैमिलियल सैंक्टिटी ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद मैरिज। ट्रेडिशनली मैरिज के साथ फैमिलियल और रिलीजियस सैंक्टिटी एसोसिएटेड थी, बट बिकॉज अब लव मैरिजेस और इंडिविजुअल बेस्ड चॉइसेस की वजह से अरेंज मैरिजेस की जो प्रिवेलेंस है वो कम हो रही है। ऑल्सो चेंजिंग जेंडर रोल्स इज इंपॉर्टेंट थिंग. See, sacramental view of marriage often emphasize the subservient role of the woman. But in modern India, there is increasing gender equality. Gender equality increase हो रही है within relationships. Relationships में gender equality increase हो रही है. Many women seeking partnership based on the mutual respect rather than traditional sacramental norms. जो traditional sacramental norms थे उससे ज़्यादा आज की जो पीपल है, आज के जो वुमेन्स और एंड मेन्स है वाइल ड्यूरिंग मैरिज, दे एक्चुअली लुक फॉर अ पार्टनरशिप विच इज़ बेस्ड ऑन द म्यूचुअल रिस्पेक्ट. करेक्ट. देन अगेन there is a rising acceptance of the divorce and remarriage. So divorce rates are increasing, that is fine, but there is a increase in the acceptance to the divorce. डिवोर्स इस चीज़ को जो एक समय पे स्टिग्मेटाइज थी, डिवोर्स वॉज विच वॉज वंस अ स्टिग्मेटाइज, नाउ इट इज़ बिकमिंग मोर एक्सेप्टेबल. मेनी इंडिविजुअल्स आर इवन ओपन फॉर री मैरिज. सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज एक्चुअली चैलेंजिंग द आइडिया ऑफ मैरिज एज अ वंस इन अ लाइफ टाइम सैक्रेमेंट. वंस इन अ लाइफ टाइम वाला जो मैरिज का जो आइडिया था इसको चैलेंज करता है. करेक्ट. सेकेंडली, नाउ factors that contribute to the changing perception of marriage. Why this actually there is a change in the perception of marriage? What are the factors? First is urbanization and modernization. Migration to cities and exposure to modern lifestyle. People are migrating to cities. They are getting exposed to the modern lifestyle, and that's why they have the encouraged individualism. They are encouraged individualism and self-prioritization. Self-prioritization and individualism is becoming more important for people who got migrated to cities and who got exposure to modern lifestyle. So that's why there is a reduction in the emphasis on marriage as a social or religious obligation. मैरिज एज अ सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन, इस पर जो इम्फेसिस दिया जाता था वो कम हो गया है. ऑल्सो
Financial independence, very important, particularly among women, that has empowered individuals to challenge the traditional expectations of marriage. ट्रेडिशनली मैरिज से जो एक्सपेक्टेशंस होती थी, फॉर एग्जांपल खास करके वुमन से, कि वुमन विल कुक, वुमन विल लुक आफ्टर दी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंटायरली. सो ये जो मैरिज से एक्सपेक्टेशंस होते हैं, इसे चैलेंज कर रही है आज की जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, स्पेशली अमॉन्ग वुमन. Then global influence, western cultural values which often prioritize individual happiness. जो western cultural values है, जो individual happiness को ज़्यादा importance देती है over the societal expectations, समाज की अपेक्षा से भी ज़्यादा important है individual happiness. तो ये जो idea है, ये जो western cultural value है, इसका जो influence है, the influence of this particular idea is increasing among the Indian youth. Correct. Then technological impact, dating apps and social media, like dating apps are there, social media is there, so that have actually reshaped how the relationships are formed. For example, traditionally matchmaking system was different. So traditionally in the traditional matchmaking system there were less options, but because of the sheer reach of these dating apps and social media, there are multiple options, and that's why they are shaping how the relationships are formed. Also there are legal reforms. For example, there are laws which support the women's rights, such as Hindu Marriage Act, and that allows divorce and decriminalization of adultery. Correct. Adultery को decriminalization किया गया. So that has empowered individuals to redefine marital roles and responsibilities. Also awareness of mental health. मॉडर्न कपल्स प्रायोरिटाइज इमोशनल कंपैटिबिलिटी. आज की जो कपल्स है वो इमोशनल कंपैटिबिलिटी को और मेंटल वेलबींग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, एंड दैट्स वाई दे ऑफन क्वेश्चन द सैक्रामेंटल कमिटमेंट्स दैट मे कॉम्प्रोमाइज द पर्सनल हैप्पीनेस. इफ द मैरिज इज कॉम्प्रोमाइजिंग देयर पर्सनल हैप्पीनेस, दे आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू दैट मैरिज, दे आर नॉट कंसिडरिंग इट एज अ सैक्रामेंटल. फाइन. So what are the arguments supporting the relevance of marriage as a sacrament? First is the cultural and religious significance. For many people, marriages remains sacred union, blessed by the rituals and deities. Secondly, social stability. Marriage as an institution that provides social cohesion and familial support. Marriage as a institution को एक social cohesion और familial support मिलता है. लीगल एंड सोशल रिकॉग्निशन. मैरिज जो है लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है, सोसाइटल लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है, जबकि वेयरएज अगर हम लिव इन रिलेशनशिप की बात करें और किसी भी अन्य प्रकार की जो यूनियंस है, दे लैक सच काइंड ऑफ सोशल लेजिटिमेसी. करेक्ट. ऑल्सो डिस्पाइट मॉडर्नाइजेशन, मेनी इंडियंस कंटिन्यू टू एडhere टू द ट्रेडिशनल कस्टम्स, सो दैट इज ऑल्सो द थिंग. सो बेसिकली while marriage as a sacrament may be losing its traditional prominence, उसका जो ट्रेडिशनल प्रोमिनेंस था वो शायद थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है मॉडर्न इंडिया में, पर्टिकुलरली अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो, बट इट रिमेन्स डीपली इंग्रेन्ड इन द कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉर मेनी. सो द इंस्टीट्यूशन इज नाउ इवॉल्विंग टू अकोमोडेट मॉडर्न आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी, पर्सनल फ्रीडम एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट. जो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन है ये इवॉल्व हो रहा है और इवॉल्व होके वो जो मॉडर्न आइडियाज़ उसको अपने में मैरिज के कंसेप्ट में अकोमोडेट कर रहा है, जैसे कि इक्वालिटी की बात हो रही है, पर्सनल फ्रीडम की बात हो रही है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात हो रही है. तो ये जो अकोमोडेशन है इट इज चैलेंजिंग इट्स अ ट्रेडिशनल सैक्रामेंटल रूट्स. सो दिस ट्रांजिशन एक्चुअली अंडरस्कोर्स the need for a balanced perspective that respect both tradition and changing aspirations of the individuals in contemporary society. Why do some of the most prosperous regions of India have an adverse sex ratio for women? Give your arguments. जो कुछ मोस्ट प्रॉस्परस रीजन्स है इंडिया के, वहाँ पर सेक्स रेशो वुमन के लिए एडवर्स क्यों है, हमें इसके आर्गूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं. Now, if we see paradoxically, ironically, many of the India's economically advanced region, जो इंडिया के जो इकोनॉमिकली एडवांस्ड रीजन्स है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड गुजरात की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर कुछ स्टेट्स में लोवेस्ट सेक्स रेशोज़ है.
among in the country. For example, according to 2011 census, Haryana's sex ratio was 879, whereas Punjab's 895, which is far below the average of 943. So this phenomena can be attributed to entrenched socio-cultural norms, economic factors and misuse of टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी का मिसयूज. कौन सी टेक्नोलॉजी? पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंदर जो सेक्स सिलेक्शन टेक्नोलॉजी है, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन वाली जो टेक्नोलॉजी है, इसका मिसयूज, सो विच एक्चुअली प्रिवेल्स डिस्पाइट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के बावजूद भी ये सब चीज़ें प्रिवेल करती है. सो नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूट टू एन एडवर्स सेक्स रेशो इन द प्रॉस्परस रीजन्स? फर्स्ट, पैट्रियार्कल माइंडसेट एंड सन प्रेफरेंस. देखो, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हैज़ नॉट इरेडिकेटेड डीप रूटेड पैट्रियार्कल नॉर्म्स. इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ गई, देयर इज अ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, but it has not necessarily eradicated those patriarchal norms which are deeply rooted. So sons are actually traditionally preferred because they are viewed as a heirs and financial supports. Sons are actually preferred for this because they are heirs, they are looked upon as a heirs and financial supporters in the old age, while daughters are seen as a financial burden due to dowries. Correct. So also there is a misuse of technology. For example, the prosperous regions, they have better access to medical facilities, including technologies such as ultrasound and sex determination technologies. So these technologies are actually misused for the female foeticide, despite there is a legal prohibition under PCPNDT Act. Under PCPNDT Act, it is legally prohibited to use these sex determination technologies to identify what is the possible child, it is male or female. So it is actually prohibited, but still it is misused, and it is leading to female foeticide. Also, economic burden of dowry. In wealthier states, there is a rising economic expectations that led to the exorbitant dowries, that is exacerbating the preference for the male children, because of the dowry. Also, there are cultural practices and land inheritance laws in agrarian and industrially prosperous states. जो एग्रेरियन और इंडस्ट्रियली प्रॉस्परस स्टेट्स है जैसे कि हरियाणा और पंजाब, यहाँ की अगर बात करें तो लैंड होल्डिंग जो है, लैंड होल्डिंग इज़ अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ वेल्थ. वेल्थ का सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट जो है वो लैंड होल्डिंग है, लैंड होल्डिंग. करेक्ट. सो फैमिलीज प्रीफर सन्स. Why? Because they want son to inherit and manage the property. So there is a fear of fragmentation of land if daughters inherit it. There is a fear of fragmentation. Correct? Urbanization and decline in joint families. In urbanized areas and most prosperous regions, especially, the nuclear families are becoming norm. They are preferred norm. Correct. And that's why there is a heightened expectations from a single child, because nuclear families are being now preferred in the prosperous region and urbanized region. Correct. And that's why there is a expectations from a single child. So that actually intensify the preference for a male, because if they want a single child and they can have a single child, so they definitely go for male. They prefer male because according to them they pursue male or son as someone who can ensure both financial security and family legacy. So when also the second important factor is lack of social empowerment for women. For example, there is economic development in prosperous regions, but this economic development has not necessarily translated into social empowerment for a woman, and that's why the female education and workforce participation remains very low as compared to male counterparts. So this absence of independent agency reinforces the traditional roles that perpetuate the gender bias. Also, skewed development priorities. Prosperity in many regions has focused on material wealth. Prosperity का मतलब according to in many regions prosperity has actually focused more upon the material wealth and infrastructure, and that have not addressed the gender disparities.
prosperity, under the meaning of prosperity, gender disparity does not come for many reasons. And for them, prosperity means material wealth, or let's say infrastructural development. So that's why, for example, Punjab and Haryana, they rank high on the income indicators. On income indicators, Haryana and Punjab, they rank high, but then when it comes to social indicators, they lag behind. Correct. Cultural preferences for smaller families. See, when any particular family become economically prosperous, they mostly prefer small family size. Small family size. Why? Because there are higher living costs and there is a urban lifestyle. That's why they prefer son in such a cases. Now, what is the impact of adverse sex ratio? Because of the adverse sex ratio for women, it actually increases the crime against women, because that led to the trafficking, crimes like trafficking and forced marriages. ज़बरदस्ती से शादी. क्यों? क्योंकि शादी करने के लिए there are not enough bride. Psychological and social pressure on women. There is a psychological and social pressure on the woman because of this adverse sex ratio, because they want son only. So to produce male hairs, there is a pressure on the female. Correct. Then there is a demographic imbalance, because there is no natural demographic balance. Because of the skewed sex ratio. This natural demographic balance is disrupted. Also, there is a economic and social instability, because lack of women in the workforce limits economic potential. So what are the measures we need to take to address this particular issue? We need to ensure that there is a strict implementation of PCPNDT Act, so there is no misuse of the technology. Then we need to go for social awareness campaigns like we have already done. For example, Beti Bachao Beti Padhao program. Beti Bachao Beti Padhao. Then we need to incentivize female birth. For example, in states like Rajasthan, they have introduced financial incentives for families with daughters. The families who have daughters, for them there are financial incentives. For example, Rajashri Yojana. We need to encourage female education and workforce participation. When there is a higher female education and economic independence is there for women, for example, in Kerala, the key to reducing a gender bias is to provide them higher education and economic independence. Also, we need to focus upon changing social norms. We need to engage community leaders, and we need to promote gender equity through what? Cultural and religious institutions that can help changing a long-standing biases. So this adverse sex ratio in the prosperous regions of India is a stark reminder that economic growth does not necessarily or inherently dismantle the social and cultural biases. So to address this issue, we require a multi-pronged approach. Which combines strict legal enforcement, social awareness and structural reforms to ensure that prosperity also translates into equitable development and social empowerment also. So by fostering an inclusive mindset, we need to foster an inclusive mindset. We also have to empower women. So by doing this, if we foster inclusive mindset and if we empower women, we can actually move toward achieving gender parity and demographic balance. Fine. So I hope you understood all the 3 questions. We will discuss further questions of the next topic in the next video. Thank you very much.